Yes, chalo. Let's go ahead with the next content, just proteins. दो लेक्चर है ना, रुक जा जरा. नंतर बोलूया. रेकॉर्डिंग बंद झालं ना. चलो, going ahead, we go for the next biomolecule, which is protein. Now, when we talk about protein, we know that this is a biomacro molecule. When I say that it is biomacro molecule, meaning it is having its molecular weight greater than 1000 Dalton. Its molecular weight will always be greater than 1000 Daltons. Okay. Now, with that respect, we firstly need to know that how exactly these proteins are formed. So, talking about how proteins are formed, these are polymer of amino acid. What do we understand by this statement that it is polymer of amino acid? कल मैंने बताया था monomer polymer का मतलब. It is very good. It is a chain of amino acid. So firstly, let us try to understand कि amino acids क्या होते हैं, फिर protein समझते हैं. ठीक है? So जब amino acids का बात करते हैं, we know that it is an organic acid. So how will its structure be? It will have carbon and hydrogen present in it. So hydrocarbon and hydrogen. Amino acid, so that means it has acidic group present in it. So we make it as COOH. Correct? Amino acid means it will have amino group also present in it. Yes or no? So we will add amino group in it, which is NH2. Valency is satisfied, Purva? Carbon valency is satisfied? No. How many valency is pending? One valency is still pending, beta. So that one valency which is pending is being sufficed by any R group. R stands for what? Alkyl group, right? R stands for alkyl group. So any alkyl group can come at the fourth position, which is the fourth valency to satisfy the fourth valency of carbon. Are we clear, everyone? So ideally, this is the structure of amino acid. Okay. If I want to ask, okay, क्या हम दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं क्विकली? आगे आ जाओ, जो चार जन बैठे पीछे. तो सोहम आगे आ जा. तू वाला नहीं, तेरे आगे वाला. सोहम आगे ना. Now, with that respect, generally, when I say, okay, Jay, when I say that you have a compound which is amino acid, technically speaking, what do we understand? It is acid, base, or neutral? Technically, we would always say it is an acid, yes or no? Yes. But if you look at the structure of amino acid, it has one acidic group, yes or no? This group is what? So I write acid over here. It has one. NH2 becomes base. So it has one acid and one base. If I have one acid, one base, together it becomes neutral. Correct? Depends on power of hydrogen. Okay, depending on the pH, but then pH will not be of single compound. No? pH will be of entire compound. You cannot have pH of only this. You cannot have pH of only this. Right? Correct. So that is what I'm saying, Jay. Combine होके जो pH मिलेगा वो ना. लेकिन अगर एक acid और एक base है, obviously together they will come out to neutral. In a compound. See, what you said is correct. अगर मेरे पास एक पूरा acid है as a compound और एक पूरा base है as a compound, फिर depending on के कौन सा ज़्यादा stronger है, whether acid is strong or base is strong, the pH will be decided and you decide whether the solution is acid or base. Here I am saying that's a single compound.
which has both acidic group as well as basic group. So together it will cancel each other's charge, na? So then it becomes what? So that means when I say amino acid, it is not acidic in nature, beta. It is rather a neutral compound. Remember that. Amino acid is ideally a neutral compound. अब depending on R group में क्या आएगा, we can classify the amino acids into various categories. Are we clear? Yes or no? So when I say depending on R group, alkyl group तो दुनिया में कितने सारे हैं ना? तो जितने alkyl group है उतने amino acids होंगे क्या? Yes. जितने alkyl group उतने amino acids है. Are all of those amino acids involved in protein synthesis? No. Only 20 amino acids are involved in protein synthesis. याद रखना. अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस की वजह से जितने चाहिए उतने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं दुनिया में, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स काम लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं. तो बाकी के अमीनो एसिड्स क्या काम करेंगे सर? बाकी के नहीं वेस्ट नहीं है. बाकी के अमीनो एसिड्स तुम्हारे बॉडी में दूसरे काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस. क्या काम है वो जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तुमको पता चलते जाएगा. ठीक है? आर वी क्लियर? Now this 20 amino acids can further be classified based on the alkyl group. So you may have a simple amino acid. Simple amino acid are those जिसमें alkyl group will have pure alkyl group. There are no functional groups present in them. So such type of simple amino acids include proline, valine, alanine, leucine, isoleucine, and glycine, where glycine is said to be the simplest amino acid that exists. Glycine is said to be the simplest amino acid that is existing. Why do I classify it? Why do we classify it as simplest amino acid? Is because उसके alkyl group में it has only hydrogen molecule present. यानी यहाँ पे ऐसे होगा. This becomes glycine. So this is the simplest that one can ever think about. यहीं पे when I add CH3, which is what? Methyl group. So when I add methyl group, it becomes alanine. Are we clear? When I add ethyl group, it becomes valine. When I add propyl group, it becomes leucine. When I add isopropyl, it becomes isoleucine. Do we understand? Can I समझे? So simplest amino acid that exists becomes second simplest will be. Are we clear? Yes or no? Yes. Does this come in NEET examination? Yes, because it's given in your NCR. So it will come in NEET examination. हाँ तो पहले वो लिख लें. चले आगे. Everyone. So this is regarding simple amino acid that we had to understand. Apart from that, you also have something called as alcoholic amino acid. यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसके अल्काइल ग्रुप में you will have hydroxyl group as functional group, right? So if it is CH3 over here, it can be CH2OH. So that becomes alcoholic amino acid. ऐसे हमारे पास दो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा. एक होता है सेरिन और एक होता है थ्रियोनिन. These are two alcohol containing amino acids that are existing. You can also have sulfur containing amino acid which will have sulfhydryl group present in them. Okay? Now sulfur containing amino acids are again two, which is cysteine and methionine. We would have cysteine and methionine. Are we clear up till here, beta? Any doubts? All sort? You can also have aromatic amino acid.
meaning one which will have aromatic rings present in them. I'm assuming you are aware about the aromatic rings. Benzene rings जो होते हैं मतलब बेंजीन जैसे रिंग्स. Now aromatic amino acid तीन प्रकार के होंगे, which is phenylalanine, tyrosine and tryptophan. So these are three amino acids which will be aromatic amino acids. Apart from that, we can also have acidic amino acid. When we talk about acidic amino acid, you have something called as glutamic acid and you have something called as aspartic acid. Why do I classify it as acidic amino acid? Is because the alkyl group will have acidic group in them, carboxylic group, and that's why that एक acid एक base था, अब acid का एक और compound बढ़ गया या acidic group एक और बढ़ गया, तो obviously the pH will decrease. pH decrease हो गया तो automatically it becomes acidic. वैसे ही अगर मैं एक और methyl group डाल दूंगा तो it becomes, अरे नहीं, उसी compound में नहीं. If I have one acid, one base, and I add one base extra, so obviously the pH will increase, leading to alkaline amino acid, which is nothing but basic amino acid. So basic amino acid will include lysine, arginine, histidine, and then इन दोनों को ही मॉडिफाई करके बनाया जाएगा, which is glutamine and asparagine. इन दोनों के अंदर जब मैं अमीनो ग्रुप बढ़ा देता हूं तो it turns out to be an alkaline amino acid, which is glutamine and asparagine. Are we clear, everyone? हमें ये पूरा रट्टा करना पड़ेगा क्या सर सारे 20 अमीनो एसिड? Well, not really. You don't need to. अगर कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सारे अमीनो एसिड्स का नहीं दिया है इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ का दिया है. सो इफ यू स्टडी ओनली दोस फ्यू इट इज फाइन, बट इफ यू स्टडी ऑल इट इज बेस्ट. जैसे अपने को जमता है वैसा. अगर हमको ऐसे कि नहीं खाली एनसीईआरटी करना, बाहर का नहीं करना, इट इज कंप्लीटली फाइन. उतना कर लिया तो भी बहुत है हमारे लिए. ठीक है, याद क्लियर है? गिन लो, 20 है, गिन लिए? अच्छा, साथ ही में गिन रहे थे. चलो, so these are 20 amino acids which are involved in protein synthesis. They are involved in protein synthesis. इसके अलावा एक और आइडेंटिफाई किया है साइंटिस्ट ने, which is cysteine. Again, sulfur-containing amino acid which is modified from cysteine. Cysteine को modify करके बनाया जाता है, which is cysteine. But then that is not in our syllabus, so we are not discussing that. This is only for your information. Are we clear? चले आगे बेटा. ऑलराइट, क्या म्हणतोय? फंक्शंस क्यों देंगे उसका? अमीनो एसिड हैज ओनली वन सिंगल फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस. दीज 20. चलो चले आगे बेटा. अब सो दिस वाज माय आर ग्रुप. करेक्ट. इस अमीनो एसिड को जब तुम पानी में डालो, when you have aqueous form of this amino acid, it tends to get converted into a particular ionic form, जहां पे COOH में से H निकल जाता है, and that H gets added over here, so this becomes H3+. नहीं समझे? जैसे ही मैं एक्वियस सॉल्यूशन में डालता हूं अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड के एसिडिक ग्रुप में से हाइड्रोजन निकल जाता है. इट गेट्स डिसोशिएटेड फ्रॉम हियर एंड गेट्स एडेड एट अमाइन ग्रुप, बिकॉज ऑफ व्हिच दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. आर वी क्लियर? यस और नो एवरीवन? ओके, हाँ बोलो. हाँ, इसलिए आयनिक ग्रुप बताया है, चार्ज्ड है.
It is not as such forming bond. It's just they stuck to it. Are we clear? Yes or no? Now, when we talk about this particular ion, which has both positive charge as well as negative charge, this particular ionic compound, which has both positive as well as negative charge, is called as Zwitter ion. You call it as Zwitter ion. Twitter नहीं है, Zwitter है. Zwitter ion कहते हैं इसको. ठीक है? So any ion which has both positive as well as negative charge will be called as sort है. Any doubts? So amino acids do show their Zwitter ionic form under aqueous condition. ठीक है? समझे यहाँ तक बेटा? कोई doubts है? Are we sort up till here? With that respect, over here we also give ends. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में कल एंड टर्मिनल सीट अपना रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कहा था कि राइट एंड इज रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड इज, ये तो बताया था हमने. वैसे ही यहाँ पे अमीनो एसिड्स के लिए भी सेम चीज हम कर सकते हैं बेटा. इसका जो राइट एंड होता है वहां पे हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिस वजह से यू मेंशन दिस एज सी टर्मिनल एंड. Whereas left end will always have amino group present, so this will be called as अरे वाह end terminal end. Are we clear? Yes or no, everyone? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन अमीनो एसिड्स में से प्रोटीन कैसे बनाया जाएगा. How exactly is protein formed from these amino acids? So let's try and find out that. इतना लिखने पहले ये आगे पढ़ो तो समझेगा. फटाफट लिखो चलो. हाँ 2 मिनट रुको. चलो, the next thing that we understand is how exactly बाकी लिखने का अभी सुन ले. चला, I'm not erasing. The next thing that we have to understand is how exactly amino acids combine to form proteins. ठीक है? So what happens is you have an amino acid. These are two amino acids that are existing. अब पिछले लेक्चर में, that is yesterday, we spoke about glycosidic bond formation. Do we remember that? Where two monosaccharides combine to form dipeptide or disaccharide, right? Likewise over here, you will have two amino acids combining to form a particular structure. How do they combine? Same method. You will have OH and H combining together. There will be removal of. This process can be called as या फिर it can be dehydration or it can be condensation. Are we clear up till here बेटा? Now with that respect, जब ये आगे आएगा तो एक बॉन्ड बनाएगा. So it tends to form a particular bond, right? And this is that bond. This bond is called as peptide bond. क्या म्हणतात? Or you can call it as peptide linkage also. You can call it as peptide bond or peptide linkage. We many a times also refer it as CONH linkage. Many a times we also refer it as CONH linkage. Shrish, ध्यान इधर बेटा. Are we clear? Everyone? Any doubts? बन गए हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, वैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना. अब इसमें एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. तुम दोनों बॉन्ड्स को पकड़ो, ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड. इसमें क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी मैं किसी कंपाउंड को पानी के साथ, या if I want to break down a particular chemical, let's say I want to break down a particular sugar,
which is composed of 8 monosaccharide units. How many water molecules will be used or released? पहली बात, water molecules will be used or released. If I want to break down, use your brain. जय क्या बोलता है? Nothing will happen. अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो पानी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर रिलीज होगा? बराबर. तो वही बात हुआ ना, अगर इसी का 8 अमीनो एसिड्स होंगे बेटा तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे या निकलेंगे इसमें से? करेक्ट. वी विल रिक्वायर वाटर मॉलिक्यूल्स. इफ देयर आर 8 अमीनो एसिड चेन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल आई रिक्वायर? कैसे पता चला? n-1. आर वी क्लियर? यस और नो? जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बने उतने वाटर मॉलिक्यूल्स अपने को लगेंगे उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए. And that is the reason that the enzyme which is responsible for breaking down this bond will be classified as hydrolytic enzyme. कुछ सुना सुना लग रहा है? कहाँ पे था ये? वहां पे हम प्रोटीनेज पढ़े थे, याद है? Which is nothing but the one that breaks down the peptide bond. Are we clear? Yes or no? Have you heard about something called as pepsin? Digestive juice in our gastric region, which is gastric enzymes. We'll have pepsin as one of the enzymes. Yes or no? That pepsin breaks down what? Proteins. Which is what? It will break down which bond? That means it will utilize what? That means it is classified to be a which enzyme? समझे कि नहीं समझे? Everyone, can I go ahead? चलो. अब इसमें जब पानी निकल जाता है ना, when water is been released, the amino acid which is so formed after release of water, this is called as residue. What do we call it as? We call it as residue. And the structure which is so formed right now after peptide bond formation is called as dipeptide. क्या बोलते हैं इसको बेटा? डाई मतलब पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड. बराबर है. अब यहाँ पे तो एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है ना, तो हम डाइपेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं विपल? गुड मॉर्निंग. यस रयान. Why will I call it as dipeptide? Peptide bond तो एक ही बना, उधर भी किधर बना है? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइपेप्टाइड. आगे पीछे कुछ नहीं है. दो कंपाउंड की वजह से. कंपाउंड क्या है वो? करेक्ट. There are two residues of amino acid which are bound together by peptide bonds. Thus the term comes as dipeptide. So if I have a question, how many amino acids will be involved in tripeptide? Answer will be कितने? अरे डाइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड है? और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? n-1 हुआ, 2-1. ऐसे अगर ट्राइपेप्टाइड हुआ तो कितने अमीनो एसिड होंगे? कितने होंगे? 3 होंगे ना. और टेट्रा होगा तो पेंटा 5. क्या? पेप्टाइड बॉन्ड या अमीनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड या अमीनो एसिड? अकल चल पा रहा है? एवरीवन, वो मोनो डाई ट्राई पेप्टाइड जो भी दिया है, पेप्टाइड इज जस्ट अ बॉन्ड. उसके आगे वाला सारा इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड. तो टोटल पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना होगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1. कहते हैं एवरीवन, इसके ऊपर इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो हम कर पाएंगे. चले आगे बेटा. ऑलराइट. सो या इतना लिख लो. चलो पहले, फिर हम देखते हैं कि आगे. अब इसमें सुनो 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 सुन लो सुन लो. अब आगे आगे जैसे जैसे अमीनो एसिड लगते जाएगा, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड बनते जाएगा. आफ्टर डेकापेप्टाइड विल हैव हाउ मेनी अमीनो एसिड? 10 अमीनो एसिड्स के बाद जो भी लगेंगे इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. क्या बोलेंगे? सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर ऑलवेज पॉलीपेप्टाइड. दे आर नेवर शॉर्टर पेप्टाइड्स. आर वी क्लियर? चलो लिखो फटाफट. कि हम क्या पढ़ रहे? ऑफ डिफरेंस. चलो गोइंग अहेड. जो प्रोटीन तो बन गया,
है ना? अमीनो एसिड चिपकते 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 एक बड़ा सा चेन बन गया, जिसे हम कह रहे हैं क्या? Then A chain of amino acids is called as, is equal to you got it as AR raised to H polymeric. A polymer of amino acid is called as plus BN polypeptide. You call it as AR raised to N correct. BN plus Now that polypeptide needs to be converted into active form of protein. समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? जैसे अगर मेरे को खीर बनाना था तो मैंने इंग्रेडिएंट डाल दिया, अब I need to go ahead for the final destination which is खीर बनना चाहिए ना. खाली चीजें डालने से थोड़ी चीजें बन जाती है, फिर तो मजे ही होते थे अपने. ऐसा नहीं होता. There's a process after addition of ingredients also. So here we have added ingredients. Now the time comes where we need to convert it into active form of protein. When you observe protein under specific instruments, they are very twisted and turned structure. Simple structure नहीं होता है. Straight chain जैसा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोले ना, straight chain, spiral chain, branch, ऐसा नहीं होता. Protein is a very complex structure which tends to undergo 4 levels of foldings or 4 levels of changes after polypeptide chain formation. Are we getting the point? नहीं समझे? ईयरफोन है किसी के पास? 14 ये सब पहले भी हुआ है ना? ईयरफोन नहीं, कट कर दो फिर. ये लिखो 1 फोन वापरता है, 3 ईयरफोन, ईयरबड्स नहीं. सुनो क्या सीन हो. 7 You have protein which gets folded. 31 and so on. चालू करो. Protein gets folded at 4 levels. डिफरेंस यार है. The first level that we have is called as primary structure. अच्छा, of क्या निकालना है? protein. ओके, TN T7 T9. The first level that we have is called as primary structure of protein. अब इस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो एक के बाद एक चेन में ऐसे लगना शुरू होता है. डिफरेंस ही जीपी में आ जाएगा. कर लेना फटाफट. This is the primary structure of protein, where from this structure we would understand which amino acid is added after which amino acid, meaning we get to acquire sequence इसमें डिफरेंस of amino डीएन पता है तुम लोग को? acid. काम पे दूसरा देता हूँ इसके बाद. पहले इससे क्या फायदा सर? कोई भी अमीनो एसिड लगाओ प्रोटीन तो बनेगा, ऐसा नहीं होता है. पता है ना, काफी स्पेसिफिक तरीका होता है. अगर मुझे केक बनाना है तो आई नीड टू नो द प्रोटोकॉल कि पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, फिर क्या डालना है. सारा सब कुछ एक साथ डाल नहीं सकता और वो सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकता. यू चेंज द सीक्वेंस, अलग ही चीज बन जाएगा पूरा. यस और नो? दिस इज प्रीटी मच नोन फॉर एवरीवन. Likewise, when we are forming a protein, it is very very important, very very basic importance है इसका कि हमें पता होना चाहिए कौन सा अमीनो एसिड पहले आता है, उसके बाद कौन सा लगेगा, थर्ड कौन सा लगेगा, फोर्थ कौन सा लगेगा. अगर इसमें से एक भी अमीनो एसिड गलत लग गया ना तो प्रोटीन ही गलत बन जाता है, जिस वजह से बॉडी में काफी ज्यादा abnormalities होते हैं. Have you heard about something like sickle cell anemia? That is because one amino acid added is falsely added. Only one single amino acid गलत लग जाता है. यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था ना, उसकी जगह पे वैलिन लग जाता है गलती से, और उस गलती की वजह से इंसान को जबरदस्त प्रॉब्लम होता है, which is sickle cell anemia हो जाता है. Is it a problem? It's a huge problem. Why? 12वीं में पढ़ते हैं. यहाँ तक क्लियर है? So बोला ना 12वीं में पढ़ते हैं, सब भी जान लेगा. यू हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज आरबीसीज कम हो गया ना सिकल सेल एनीमिया में. आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन बराबर से नहीं जा रहा है. देयर आर नो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरियर्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड, सो यू कैन नॉट डू रिग्रेस वर्क. यानी जो एक 1 फ्लोर का सीढ़ी चढ़ के आया ना तू, वो उतना चढ़ते ही तू जोर जोर से हाफने लगेगा वैसा. सो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी रिग्रेस एक्टिविटी. अब पढ़े बस आंखें इतनी और ज्यादा नहीं बाहर आ जाएगी. चलो डिड वी अंडरस्टैंड अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड? कैसे क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको बताता है कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस क्या है. उसके बाद
यही सेम स्ट्रक्चर goes for a fold which turns out to be secondary structure. यही सेम स्ट्रक्चर अब फोल्ड हो जाएगा. जब ये स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाएगा इट विल गेट फोल्डेड इन टू मेथड्स. दो तरीके से फोल्ड हो सकता है. या तो वो ऐसा फोल्ड हो सकता है, इसे हम कहेंगे अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड. कैसे पता? known as बीटा प्लीटेड एक क्वेश्चन शीट स्ट्रक्चर. ठीक है. अब अगर मेरे पास फाइंड ईयरफोन पर मेरे को खोलने को बोर हो रहा था. T4 सुनो, T4 if this is the straight structure that I have, T8 करो. बोर्ड का है. T4 का T4 तो मैं खुद दे दूंगा तुमको. फाइंड Tn T8 This is a straight chain, right? Sn बहुत लंबा है. तू इतना ही देख. फालतू सारा इंफॉर्मेशन चाहिए जो नहीं जानना है अपने को वो. This is your primary structure. 1, 2 ठीक है. Where amino acids are attached one after the other, so you get to know the amino acid sequence. 64 After this primary structure is formed, it tends to curl by itself. 9 23 64. This becomes यहाँ पे लग जाओ सब लोग. alpha पहले वाला भी helix. कंप्लीट करो, ये भी कंप्लीट If करो. I remove my finger, will the structure remain as it is? Structure change. ठीक है. Okay. जाओ बेटा. Next, cut to. यहाँ है. I might have foldings like this also. Can you see this? This becomes what? Beta plated sheet structure. If I remove my fingers, the structure remains as it is? No, the structure got changed. That means, no doubt that this particular structure will get converted into alpha helix and beta plated. But then, you need to stabilize that structure also. That means, हमें उससे उस structure को maintain करके रखवाना है. ठीक है. हमें मतलब वो खुद ही कर लेता है ये चीज. उसको इस स्ट्रक्चर में मेंटेन रहने के लिए कुछ बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे. यानी कि अगर मैं चाहता हूँ आधे बच्चे कुछ भी झूठ कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे, तो मैं उंगली हमेशा घुसेड़ के नहीं रख सकता ना इसमें. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूंगा सो दैट इट रिमेन्स लाइक दिस. समझ पा रहे हैं? ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना ऐसे वाले, इनके बीच में आई विल फॉर्म बॉन्ड सो दैट द स्ट्रक्चर डू नॉट गेट्स डिस्पैर्ड. समझे? अब यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है. इन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए यू हैव सर्टेन बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड. हो गया. दोनों हो बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड. गया. दोनों हो गया. Hydrogen bonds are formed for stabilizing their structures. ये Tn क्या है पहले वाले का? Yes or no, beta? Hydrogen bonds will be utilized for stabilizing their structure. Are we clear? 2:n. If you understand? Very good. अब हमारे NCERT बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ना, these are formed between. करना. These are formed between. Very good. Side chain of amino acid. AA is amino acid है बाबा. Is formed between, चल लिख लेता हूँ पूरा फिर रोएंगे. It is formed between side chain of amino acid. अब side chain क्या होगा सर? What is side chain? देखो, this is my main chain, right? This will be my main chain. That is NH2C CONH C COOH. तो आगे वो बढ़ते जाएगा. So CONH C CONH C CONH ऐसे पूरा एक चेन बनते जाएगा. This is the primary chain that we have. So primary chain will obviously be forming a structure like this or like this. इसके अलावा you have R which is present. That R will be forming अरे डिस्कस chains मत करो, मैं outside यही like बोल रहा हूँ. this. Yes or no? So this turns out to be what? Side chains. क्या हो जाएंगे ये? समझे? तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं वो इन साइड चेन्स के बीच में बनते हैं. Are we clear? Yes or no? Everyone? हाँ बोलो. Why? अच्छा हाँ, नहीं एक्सटर्नली नहीं ऐड होगा. साइड चेन्स के पास अल्काइल ग्रुप है. Alkyl group will have hydrogens present in them. So those hydrogens come together and form hydrogen bonds. Of course. Yes. Are we clear? Everyone?
Any doubts? Did we understand how the structure gets stabilized? Yes or no? Clear है यहाँ तक? चले आगे. इतना होने के बाद स्ट्रक्चर जो है वो एक और फोल्ड करता है. हमने बोला ना 4 लेवल पे. So there will be one more fold which is responsible for formation of tertiary. This tertiary structure will provide us with 3D form of protein where you have hollow woolen ball like structure which is formed. तेरा कर चुपचाप. You will have formation of hollow woolen ball like structure. Now what exactly is क्या कर रहा this? है? देखो उसको छोड़ वो इसमें क्या हो रहा है. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है. हमारे पास अल्फा स्ट्रक्चर बना था, बीटा स्ट्रक्चर बना था. अब या तो सिर्फ अल्फा 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 या फिर सिर्फ बीटा 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 या फिर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा. एनी विच वेज डिफरेंस ऑफ that entire protein can coil any which way. It can form alpha, then it forms beta, then it forms alpha, it forms beta या फिर सिर्फ अल्फा अल्फा होगा. और पूरा बॉन्ड होते 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 इट विल फॉर्म सम हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर. अंदर से खाली खोखला रहेगा. समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. आर वी क्लियर? दिस स्ट्रक्चर बिकम्स व्हाट नाउ? टर्शियरी स्ट्रक्चर. क्या हो गया ये? कितने पॉलीपेप्टाइड है इसके अंदर? बहुत सारे. अकल लगाओ. हमने कितने पॉलीपेप्टाइड से स्टार्ट किया? बेटा कितने पॉलीपेप्टाइड से स्टार्ट किया? व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? दैट मींस अ चेन ऑफ अमीनो एसिड ना. पॉलीपेप्टाइड इज व्हाट? अ चेन ऑफ अमीनो एसिड. सो हाउ मेनी चेन्स ऑफ अमीनो एसिड डिड वी यूज? तेरा वो ये रॉन्ग है शायद. बोर्ड पे देखो कितने चेन यूज किए. माइनस. गुड, जोर से बोल. There's just one amino acid chain that we use ना भाई. अरे भाई ये अगर एक चेन है तो कितने चेन है ये? अमीनो एसिड उसमें लगे तो कितने चेन हुए उसमें? क्या गधे जैसा अक्ल लगा रहे तुम? क्या सोच रहे इतना? हाँ डॉक्टर जो तुम, स्मार्टली दिमाग काम करना चाहिए तुम्हारा. क्या बात कर रहे तुम यार? समझे कि नहीं समझे? कितना पॉलीपेप्टाइड यूज किया हमने? तो एक ही पॉलीपेप्टाइड अल्फा स्ट्रक्चर बन सकता है, बीटा स्ट्रक्चर बन सकता है, दोनों भी बन सकता है. वही किया ना भाई. ये पूरा एक चेन है ना, तो ये पूरा एक चेन अल्फा स्ट्रक्चर भी बना सकता है, बीटा भी बना सकता है, अल्फा बीटा दोनों भी बना सकता है. समझे? और बना के वो और जरा कॉइल हो जाता है टू फॉर्म व्हाट? अकल चालते जाऊया पुढे. अब टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसे ही बन जाता है हमें प्रोटीन का 3D फॉर्म यानी 3D व्यू मिल जाता है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है वो. ठीक है. उसके बाद आएगा लास्ट व्हिच इज कौन से सम का बात कर रही है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. पहले वाले का एसएन क्या है? प्रोटीन उसके एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. नहीं नहीं S5 पूछा था. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड के पास रखना will combine to form active protein. यानी काफी सारे ऐसे वुलन हॉलो वुलन बॉल लाइक गोले जो रहेंगे वो इकट्ठा आएंगे. तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड इकट्ठा है ना. नहीं समझे? अंजलि कहते हैं उसका चिरते नक्की ये नहीं. 4 महीने बाद मेरे पास है ना बायोमोलिक्यूल मेरे को नहीं जम रहा है सर. मार खाएगी तू. बड़ी लड़की है तो भी. मेरे 2 into 2 raised to समझ रहा है 4 raised to n लीला. कि नहीं समझ रहा है? This is absolutely wrong. So you have multiple polypeptide chain that comes together and it forms different shapes. accordingly Cup shape, spherical shape, 2 raised to cube shape, disc shape, समझा गया. कुछ भी. या एक के ऊपर एक लगा के rod shape and it forms a protein structure, an active protein structure. For example, we have something called as hemoglobin. सुने हैं? क्या हो गया? नहीं आ रहा है बीबी. वो दूसरे वाले सम का TN क्या है? नहीं किया अभी तक. करो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ. Hemoglobin has 4 polypeptide chains. It has 4 polypeptide chain. ठीक है. Composed of 2 types of chain. क्या बोल रहे हैं सर? आपको कुछ समझ रहा है क्या? अरे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. एक 2 टाइप के. समझे?
So I have 2 alpha and 2 beta chain. सर इसका मतलब ये कि ऊपर वाले के पास सिर्फ अल्फा टाइप का हेलिक्स रहेगा, नीचे वाले के सब नहीं, हम चेन को अल्फा चेन बोल रहे हैं. That chain of alpha chain can be formed by alpha beta both or only alpha or only beta, depends. सब मैं लिखूंगा, सब तेरे को ऐसा खाना भी बना चबा के भी देता मैं तेरे को, निकलेगा तू या वो भी मैं करूं. इतना स्पून फीडिंग लिख के दो, बड़ा हो गया ना. लिख खुद से, कॉन्सेप्ट समझ, खाली समझे, नहीं समझा. सुनो क्या हो रहा है, मतलब चबराने वाला या निकलने वाला, ये स्ट्रक्चर ना. हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन. अब हमारा अकल इमीडिएटली क्या चमकेगा, ऊपर भी अल्फा बीटा पड़ा, नीचे भी अल्फा बीटा पड़ा, मतलब ये दोनों अल्फा चेन से बने हैं, नीचे वाले दोनों बीटा चेन से. हम ऐसा समझेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा. उस चेन का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव अ बुक कॉल्ड एज येलो पेजेस. नहीं आ रहा है कुछ भी. दैट बुक्स नेम इज येलो पेज, आर माय पेजेस येलो, नहीं आ रहा है. अंडरस्टूड. वैसा ये चेन का नाम अल्फा है, दैट डजंट मीन कि उसके पास सिर्फ अल्फा हेलिक्स होगा. इट कैन हैव अल्फा बीटा बोथ और ओनली अल्फा और ओनली बीटा, जैसा हम पढ़े वैसा है कि नहीं आ रहा है. तो बहुत सारे हॉलो बुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा आए हैं यहाँ to form a complex protein structure. मैं करूँगा सेकंड, yes or no? Did we understand this concept? Everyone understood? Can I go one step more ahead? लाइट दिखा रहा हूँ. Or you want to write down this first, हम भूल जाएंगे. ARSN plus BN. सुनो क्या होता है, सारे प्रोटीन्स क्वार्टरनरी तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है. BN कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो टर्शियरी क्वार्टरनरी तक नहीं जाते. ऐसा क्यों सर? देखो सेकंड डिफरेंस हो गया. अगर मेरे पास एक रुमाल है, मैं 4 रुमाल ले रहा हूँ, एक छोटे बच्चे वाला, एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा और बहुत बड़ा. TN is equal to क्या बोला था? अब will all of them fold at the same level? The larger one is getting folded at? No ना, जो सबसे छोटा वो शायद 3 या 2 बारी फोल्ड होगा, दूसरा वाला शायद 4 बारी फोल्ड होगा, बाद में वाला 8 बारी होगा, ये 10 बारी हो सकता है फोल्ड. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो आई एम सेइंग ये 10 बारी फोल्ड हो सकता है. डू आई एक्सपेक्ट कि ये 10 बारी फोल्ड रहा है तो वो भी 10 बारी फोल्ड होना चाहिए? Why is that? B sizes are different, so depending on the primary structure, यानी वो पॉलीपेप्टाइड कितने अमीनो एसिड से बना है उस पे डिपेंड करके 9 है. प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एक्टिवेट हो सकता है, टर्शियरी में भी एक्टिवेट हो सकता है, क्वाटरनरी में भी हो सकता है. मतलब कुछ प्राइमरी में होगा क्या, एक ही प्रोटीन है जो प्राइमरी में होता है, बट दैट इज नॉट वेरी एक्टिव इन नेचर. 27A प्लस समझे कि नहीं समझे? Did we understand the concept? Everyone, कितना 6 है. everyone. That means it is not a scene that every protein will reach at quaternary structure. Only some proteins will reach at quaternary. Of which one of the protein that we understood is? C minus C चला गया 4 minus 2 2. Are we clear? Everyone, can we write down this? चलो quickly. minus 1. Let's go ahead and understand about the next concept where we are classifying. अभी भी माइनस का क्लियर है सारा सब कुछ. चलो आगे, चलो we go ahead for classification of proteins further. अरे सुन मेरी प्लस कैसे गया? Now proteins can be classified further based on their functions. They can be classified based on their ऐसे नहीं आ रहा, मैं करूं? अब फंक्शंस के बेसिस पे अगर मुझे इसे क्लासिफाई करना है तो हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग दैट? आई कैन हैव प्रोटीन्स व्हिच आर एंजाइम्स, यस और नो? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन दैट इज एंजाइम. यू हैव ए बी हाफ आया और सी कितना? ट्रिप्सिन 1/4 बराबर ना. अमाइलेज, इंसुलिन. देखो अभी सब लोग एंजाइम. एक पर्टिकुलर एंजाइम है which is called as Rubisco. नाम सुने हो? This is said to be one of the most abundant
protein अब मैं क्या that बोल रहा is हूँ, सुनो, existing क्या on निकालने का earth, और? यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन जनरली प्लांट्स के अंदर मिलता है अपने ये को। निकाल दो तुम लोग। और SN निकालने का सबसे है, भारी SN के लिए मात्रा इधर में देखो इस सब लोग धरती पे अभी। अगर कोई प्रोटीन SN है इक्वल टू होता क्या है? तो वो ये समेशन ऑफ याद रखना, काफी SN इंपॉर्टेंट इक्वल टू समेशन ऑफ क्या? आया था ना। 1/12 into 3 raised to n You can have प्लस hormone. n/2 प्लस क्या 1/4। ए इधर देखो रे Proteins सब can लोग, function बहुत as ट्राई कर hormone दिया। also. 1/12 Example ऐसे ही is आएगा, which we 3 का just समेशन कैसे understood. करने का? n You का can वैल्यू have पुट करते something जाने called का। as पहला आएगा growth 3, hormone. फिर क्या? फिर क्या? They can also फिर last में क्या? function as हो गया ये? structural प्लस compound, 1/2, meaning ये they 1/2 might कौन सा है? develop different structures in your n/2 वाला body. 1/2 है। Like for और example, समेशन ऑफ क्या आएगा? keratin. n। समेशन ऑफ n क्या होता है? Correct. बालों के n जोड़ों into को मजबूत बनाए। n+1 अपॉन क्या? सिल्क शैम्पू। और 1/4 वैसे रहेगा। और So समेशन ऑफ 1 keratin, क्या होता है? basically keratin, ये n/4 हो जाएगा, collagen. 1/12 ऐसे रहेगा। ये GP है देखो, इसका फर्स्ट टर्म कौन है? 3 लिख दिया मैंने 3। जिसको When we talk about collagen, सॉरी 3, this is also the largest, the abundant, not largest, the abundant protein that you find SN in का formula लग गया। animals. बराबर Plants ना? में abundant कौन फिर सा बाकी रहेगा? क्या? Rubisco. Plus धरती पे abundant N. कौन सा है? Rubisco. N+1 upon Animals 4 में abundant कौन सा है? प्लस n/4। समझा क्या? अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? तो ये 3 और ये 12 We can have 4 आएगा, इधर 4 और इधर मिलके 2 क्या हो proteins जाएगा? that 8। functions अल्टीमेट as आंसर क्या आएगा? 3 raised to n contractile protein, which helps in contraction and relaxation. Like for example, actin, n/4। ये फॉर्मूला हो गया किसका? myosin. हो गया। Correct? We've discussed about this. पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। Then you can have protein that can act as transporter also. Right? It can help in transfer substances. Like for example, you have फटाफट। hemoglobin. SN के बाद भी कुछ निकालना था। Correct. You can have myoglobin. Do you know what is myoglobin? What is myoglobin? 7411 और मसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन जैसा काम करता है, दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज विल बी कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। इसके अलावा यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज GLUT4। फटाफट करो चलो। GLUT4 में GLUT stands for glucose transporter. It is responsible for transfer of glucose molecule in liver. यानी लिवर सेल्स में होते हैं ये, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है। ठीक है। GLUT4 is present in liver. There is 1, 2, 3, 4, 5 also, but that will be at different locations. कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ग्लाइकोजन? ग्लूकोज को इकट्ठा करके ना, तो ग्लूकोज अंदर जाना चाहिए ना। हो गया फाइनली। चले आगे। Then you can have receptors also. शर्म आ रहा है। ठीक है, we do not give any examples for receptor. Okay, चलो. You have some sensory receptors. Sensory receptor is nothing but olfactory, all senses, na? Olfactory, vision, and all of that. Okay, so there are sensory receptors which are existing on cells, which tends to receive certain senses and act accordingly. Are we clear up till here? So these are various functional roles that a particular protein can perform, and based on the role that it is performing, you can classify them further like this. Are we clear? There's one more classification given in your government textbook as well, which is based on their structure. NCERT में based on their structure is this. बन गया ना? ठीक है, but ideally this is not the classification, beta. This is the way how protein tends to become active. You have another structural basis classification also to be understood, but then that is only in government textbook. Okay, and as of now, we need to focus more on NCERT because we need to focus more on NEET. So government textbook फिर के बात करेंगे. Yeah. Yes, defense protein. Yes, you have defensive protein as well. So defensive protein are ones which are involved in your immune responses. That includes antibody. ये मेरा ही लेक्चर सेकंड पता है ना? You might have something called as interferon. Interferon is a protein that is released only against viral infection. पता है ना, इसका Viruses आंसर के हाँ या against तो ना release होता होते है। हैं. You have something called as cytokines. थर्ड Okay. सुरेश चलते हैं। ऐसे अलग अलग होते हैं. You have clotting factors.
ये कंप्लीट करो, ब्रेक ले लो, ठीक है? चलो, सी यू पीपल. which will help in providing us a defense mechanism against any foreign pathogens that enter inside the body. Are we clear, beta? Yes or no? Also, WBC is a cell, not a protein. Are we clear up till here? Any doubts? So with that we end with protein part of your chapter. I hope the concept is clear, everyone. लिखिए फटाफट. चलो.